हेलो गाइस, माई सेल्फ अंचल, अ फुल स्टैक डेवलपर एट स्टार्टअप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करो। और एक नई खुशखबरी, इस चैनल पर बैकएंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो बने रहो बाइनरी टेक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर, सेट स्टेट वर्सेस प्रोवाइडर। तो आपने फ्लटर में अपनी जब जर्नी अपनी स्टार्ट की होगी तो आपने नॉर्मली स्टेट मैनेजमेंट के लिए दोनों चीज़ यूज होता है, सेट स्टेट और प्रोवाइडर। तो नॉर्मली जब हम लोग बिगनर्स होते हैं तो फोकस हम लोग का सेट स्टेट यूज़ करने पे होता है। और फिर एक सिंपल स्टेट मैनेजमेंट टूल है जो प्रोवाइडर है। तो शुरू शुरू में हम लोग इसी इसी दोनों स्टेट मैनेजमेंट टूल को यूज़ करते हैं, एक जो सेट स्टेट और एक प्रोवाइडर। ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान होता है। तो हम जानते हैं सेट स्टेट क्या होता है। तो set state is typically used for managing the internal state of widget and it work well for simple state management within the widget tree. अब जो सेट स्टेट होता है, एक विजिट ट्री के अंदर इसके कोड लिखे जाते हैं। मतलब एक जो विजिट होती है, जितने फ्लटर की जो भी चीज़ें हम कंपोनेंट लिखते हैं विजिट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये सेट स्टेट उसी विजिट को मैनेज करता है, केवल उसी विजिट में होता है। और अगर हम वो पेज चेंज करते हैं, विजिट चेंज करते हैं, तो वो इनिशियली जो फिर आप मान लो आपने एक, मैं एग्जांपल दूंगा, एक काउंटर ऐप बनाकर, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जैसे आपने विजिट चेंज किया तो जो आपने स्टेट मैनेज किया था वो स्टेट वहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। जबकि प्रोवाइडर में क्या होता है, प्रोवाइडर इज स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर फ्लटर दैट सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड मैनेजिंग and sharing state across the widget. Across the widget means normally there is lots of state management tool providers, Riverpod, Blog, GetX. So in all there is a simple and simple state management which is provider. Okay, so we can differentiate that with a code. Okay, this is example of a counter app where we use a set state function for state management. Set state use a local state management tool. Okay, so what we do, we use a counter private variable for initialize value is 0, then increment counter function to increase the counter value using set state functions. Okay, so now you print that counter value at a text widget. Okay, so and at the floating action button I call increment counter to increase that value. Okay, so now what is the issue with the set state using set state function? Okay, so when you use set state after page reload, okay, it will initialize the initial value, means you can set increase the value at 10. Let's take an example. We can increase a counter value up to 10. Okay, then go back and just go to that page again. Okay, so it's so initial value 0 because the page become reload. When you go to on that page it become reload, that's why it is so initial value. Okay, so overcome this problem we use provider. Okay, so for provider what we do, uh, at the bottom we make a provider for separate functions. We use class counter model. Counter, I don't think we can only give a name, counter model. Extend change notifier. Okay, then in change notifier we initialize a private counter which is 0, then int get a global variable counter, initialize local counter. Okay, then we create a counter function to increment function. We make an increment function. Okay. In increment function we increase the value of counter. Okay. Then notify listener for listen the changes. Okay. So this, and in upper part we can remove the this counter values and the increment counter functions. Okay, at the above of return we initialize the provider. Okay. So counter is equal to provider dot of, then counter model and context. Okay. We already add a provider package. Okay, just see in the PubSpec ML file. Okay, here you see that provider.
Okay, if you want to add a provider, just write a flutter pub add a provider. It will automatically right in terminal. It automatically adding pub spec ml. Okay, then in counter we can import that provider. Okay, now we can use that provider instead of this. We write a counter dot counter. Okay, or in on pressed we can write a counter dot increment. Okay, so now it's okay. One main thing to initialize a provider, we wrap up this my app function with a ChangeNotifier listener, ChangeNotifier provider. Okay, so ChangeNotifier provider. Okay, and remove a const part here. Okay, uh, make a create context. Okay, so create context. Context. Then counter model. Okay, then comma and child. Now it's okay, and we can rerun our app. Let's import this. We can cancel. We can cancel this and rerun again. It will take a time. Okay, it open. We can open a counter page. Okay. Now we can increase the value, counter value, up to 10, 11. Okay. Go back and again go to counter page. That's so 11. At the time of set state, it's so initial value, but at this time it's so fixed value which can increase previous state. Okay. It's so the previous state value means if we increase the 13, when we go back home page and go to counter page again, it will show 13. Okay, that's the reason we can use a provider, river prod, blog, getags, anything, because it's a global state management tool. Okay, at the end, whereas set state function is a local state management, it only manages the state in widget, on that widget only. Okay, at the time of a page reload, it show initial value. So this is disadvantage of a set state to manage the state. Okay, so thank you for watching this video. See you soon.